Bismillahirrahmanirrahim. I thinking everyone is fine and doing very well. So today we're just going to make strawberry Swiss roll. So let's see what we need to put into the ingredients. तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी स्विस रोल बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने लिया ऑल पर्पस फ्लोर, ये आप देख सकते हैं जिसे मैदा कहते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा है यानी बेकिंग पाउडर है, पिंच ऑफ सॉल्ट है यानी कि जस्ट ओनली फॉर टेस्ट, and we have 3/4 cup of means 3 cups of sugar, and we have got 4 eggs, but you need to separate the egg yolk, as you see we are just going to do in a minute. And we have this egg whitening, so we have separated both. And first we just use the blender and we just really did everything and blend it, just make a foam as much as you can do. And this is the thing you can see, this is egg yolk, and you need to actually use the beater to make it a good fluff. So you see we just beat the egg yolks, यानी कि अंडे की जो जर्दी है उनको बीट कर लिया। उसके बाद वो जो हमने 3 कप शुगर लिए हैं वो उसमें इन सब चीज़ों को एक जैसे मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। जिस वक्त हमने क्या नाम है एग यॉक और उसके बाद शुगर को आपस में जो है ना बीट किया ना, तो बीट करने के बाद ये कुछ ऐसी शक्ल दे देगा। और उसमें इस वक्त हमने 1 टीस्पून जो सा ना वो वनीला एसेंस जो सा वो ऐड किया है। फिर इसके बाद इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐड करेंगे। दिखाता हूँ आपको, आपने क्या ये पिंच ऑफ सॉल्ट जो सा यानी कि इज अबाउट नियरली ½ टीस्पून, एंड लेट देम टू ब्लेंड ऑल टुगेदर। ये सब कुछ अब हमने वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट डाल के इसे ब्लेंड कर लिया। अब इसके अंदर हम जो सा ना वो तकरीबन ½ टीस्पून जो सा है बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हमने ये तकरीबन जितना मैदा था एंड 2.5 कप जो सा ना ये मैदा देखें ऑल पर्पस फ्लोर जो सा है, यानी कि वी जस्ट गोइंग टू ऐड अप इन इट एंड वी जस्ट गोइंग टू यूज अ बीटर। ये देखेंगे सब इंग्रेडिएंट्स आफ्टर मिक्सिंग एवरीथिंग इन, लाइक वी गो मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, एग, vanilla essence, salt, sugar. So your dough going to be look like this. तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसके बाद मज़ीद इसमें ना ये फाइनल जो प्रोडक्ट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा तो कैसी लगती है। जी, as you see we just put everything in, so consistency of the batter is going to look like that, right? So it shouldn't be really very thick, it shouldn't be very liquidish. So we are just giving a final dough touch once the dough is ready. So in here you see we have just put the butter foil paper in, and we spread butter all over the tray. So we're going to put that dough in just in this tray. So अब देखें आगे what we're going to do. So आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा टेक्सचर था ना, हम लोगों ने जैसे हर चीज़ को मिक्स कर लिया बॉल से। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया इसमें ट्रे में ना। तो ट्रे में ऑलरेडी जो सा था हमने वी हैव जस्ट पुट सम बटर ऑन द बेस, वी जस्ट पुट सम बटर ऑन द बेस, एंड यू कैन सी दिस इंग्रेडिएंट्स, वी जस्ट लेट देम टू ले डाउन। सो ओवन एज आई लेट मी शो यू द ओवन फर्स्ट. So before we putting that thing into the tray, that we just put the dough of the Swiss roll. So we're just going to put the our oven on 190 degree. Yes, you see, just let them to warm it a little bit, and then we're going to stick the tray in and wait for about 15 minutes to get it ready. You see the oven is almost heated up, so we stick that in the oven now. जी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि अब हमारी जो पेस्ट्री है वो ओवन में हमने उसे कुक कर लिया है, एंड इज़ रेडी टू स्प्रेड आउट।
सो एज यू कैन सी कि मैंने ये एक टेबल क्लॉथ ले लिया जौन सा कॉटन क्लॉथ, इसके ऊपर सारा जौन सा इसको वर्टिकली जौन सा हमने इसे स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद इस पर जौन सी ऐसे शुगर जौन सी वो डस्टिंग कर दी उसकी। तो आगे दिखाते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपनी जौन सी स्ट्रॉबेरी की जो पेस्ट है बनाई है हमने वो। इवनली आप इसको ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। As you can, we just spread out all the strawberry sauce. We just boil some, fresh strawberries and put some sugar in. Just make a little bit liquidish form, and you just spread out just like a toast. You just let it go around all over the bread. As you see, we just use this cloth as it was spread, because if you were just trying to do over the hand, it's not easy. So what you do, just use this paper and we just fold it up. And let me show you around if I could do it. आप देख सकते हैं कि यहाँ से ना एक लेयर्स कितनी खूबसूरत सी बनी है इसकी, ये देखें। तो आई होप कि ये बड़ा अच्छा। उसके बाद अब इसको हमने क्या नाम है मैरिनेट करना, ऊपर से दिखाएंगे जी हम इसको डेकोरेट कैसे करेंगे। सो वी जस्ट रोल देम अप लाइक दिस and we're going to leave in a fridge for about 1 hour.